against the Singh Thakur at serial number 2 of today's revised list of business. Thanks. Item number 3, Sri Krishnapal ji. संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। Item number 4, Sri संजीव कुमार बालियान। मैं आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। Item number 5, श्री नित्यानंद राय जी। मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के सम्मुख लिखित दस्तावेज सभा पटल पे पत्र रखे जा रहे हैं। Item number 6, श्री शोभा कारंद लाजे। Respected sir, I lay the paper shown as serial number 6 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. Item number 7, श्री कैलाश चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मैं मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 7 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Item number 8, सुश्री प्रतिभा भौमिक। से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के उल्लेखित दस्तावेज। Item number 9, श्री मेघवाल जी। Thank you, Speaker sir. On behalf of Sri Prahlad Joshi, I present the 46th and 47th reports of the Business Advisory Committee as listed at serial number 9 in today's revised list of business for Lok Sabha. Thank you. Item number 10, श्री संजय जायसवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति का 31वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। नंबर 11, श्री संतोष कुमार गंगवार। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 12, श्री जगविंदा पाल। प्रदीप कुमार चौधरी। ओके Sir, I wish to lay on the table a copy of each of the two statements, Hindi and English version of the Standing Committee on Energy as listed against my name in today's revised list of business. Thank you. Item number 13, Sri P.P. Chaudhary. सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी सहयोग की रूपरेखा विषयक विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति 17वीं लोकसभा का 26वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। Item number 14, श्रीमती लॉकेट चैटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। I beg to present the 34th report Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name is today's list of business. धन्यवाद। Item number 15, माननीय गृह मंत्री जी। महोदय नित्यानंद राय जी। मैं माननीय अमित शाह जी की तरफ से उनकी अनुमति से महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का और संशोधन करने वाले एक विधेयक का एक प्रोफेसर स्वागत राय।
Sir, under Rule 72(1) of the Rules of Procedure, I beg to oppose the introduction of a bill further to amend the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. Sir, yesterday, the Supreme Court in a judgment has upheld the abrogation of Article 370 by the Government of India. Now the main question remains, when elections will be held in Jammu and Kashmir. Yesterday, Supreme Court has said that elections must be held within September 2024. All I want to say, this Kashmir Reorganization Act is meant to give reservation to women in Jammu and Kashmir Legislative Assembly. So unless the elections are announced by the Election Commission, there is no hurry to pass this act of reserving seats in the Jammu Kashmir legislature. That's why I want this act to be opposed. रिप्लाई होगा उस समय सारी बात अभी रिप्लाई के समय इनका सारी बात प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में है, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को प्रस्तावित करें। विधेयक को प्रस्तावित। आइटम नंबर 16। महोदय, मैं माननीय अमित शाह जी की तरफ से प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी, विधेयक को प्रस्तावित करें। मैं माननीय अमित शाह जी की तरफ, माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से मैं इस विधेयक को इंट्रोड्यूस करता हूं। Now we take up 0 hour. Dr. Umesh Jadhav. Thank you, Speaker, sir. I am raising very important issue for the past 3 years regarding inclusion of Koli, Kurba, Kabalga and ST list, sir. Sir, it's on. Sir, in this regard, all commission of the state, Koli, Kabalga, Gangamat and its synonymous are recommended by the state government of Karnataka for inclusion in the ST list of Karnataka. Currently, it is in the RGI for evaluation. In this regard, for inclusion of ST in list, also necessary anthropological report and tribal character in census report 1901 to 1931 report sent by the state government. Sir, currently, some of the communities like Tokre Koli, Dhor Koli, Koya, Kolcha, Kolga, Raj Koya, Bin Koya are included in the list of Karnataka in 1976 in the serial number 22 and 26 respectively. But the remaining leftover from the Tokre Koli, Koya, Dhor Koli, that is Koli, Kabalga, Gangamat, and its 34 synonymous are necessary to include in the list of ST list in Karnataka. Speaker, sir, I would like to urge through you to the Honorable Tribal Minister that now this file is under RGI for the evaluation. I request you to expedite the matter and include the Koli Kabalga community in the ST list. Sir, also Gonda, that is Kurba of Gulbarga and Bidar district are also demanding for inclusion of the community in the scheduled tribe list. From the independence, the Kurba community was having the ST status in 1977. Justice LG Haunur, who headed the Backward Class Commission, moved the Kurbas
to the most backward classes category from the ST list. However, the commission brought in an area restrictions stating that those living in Bidar, Yadgir, Kalburgi and Madikeri were with Kurba synonymous can continue to avail the ST benefit, but still people from these districts were denied to get the ST certificate either for education or employment. Sir, in Kalburgi, Bidar and Yadgir district, Kurba, the alternate word Gonda with the report of complete genealogical study passed in Cabinet of Karnataka government on 4/3/2014 and proposal has been sent to central government. Sir, I would like to mention here that I have met Honorable Minister with delegation to consider this request positively couple of times in the past 3 years. Since then, it is long pending demand from parliamentary constituency and from the state. These two community people are very backward, both economically, educationally, socially. If they were included in the ST list, it would help them to get reservation benefit in both the education and employment. Thank you. ठीक है, थैंक यू। मान्य सदस्यों, जम्मू कश्मीर तथा पुडुचेरी में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक में 1 बजे तक अमेंडमेंट्स दिया जा सकता है। 0 आवर श्री कौशलेंद्र कुमार। आपने शून्य पहर में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने संसदीय क्षेत्र नालंदा कोरोना काल में जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी उसका किराया अधिक वसूला जा रहा था और आज भी कोरोना समाप्त हो गया है सभापति महोदय, और महंगाई की भी मार है, गरीब लोग लगातार मांग करते रहे हैं तो वह किराया वापस लिया जाए जो अतिरिक्त बढ़ाया गया है स्पेशल ट्रेन का। उसी से संबंधित नालंदा रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी का ठहराव अनिवार्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ओपन यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी किया गया है सभापति महोदय, और उस विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थी और प्रोफेसर सभी का डिमांड भी रहा है कि यहाँ पर इंटरसिटी का ठहराव नालंदा में किया जाए। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र में रहुई पहले स्टेशन था, अभी उसको होल्ट बना दिया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डेंटल कॉलेज का भी उद्घाटन किया गया है। काफी मरीज वहाँ इंटरसिटी से आते जाते हैं। वहाँ इंटरसिटी का ठहराव इसलिए नहीं हो रहा है कि वहाँ पहले स्टेशन था, अब होल्ट हो गया है। तो मेरा मांग है कि रहुई रोड स्टेशन को दर्जा दिया जाए और वहाँ पर इंटरसिटी का ठहराव किया जाए। सभापति महोदय, आज देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे किराए में पहले छूट दिया जाता था, लेकिन कोरोना काल से वो छूट को समाप्त कर दिया गया है। कोरोना समाप्त हो गया है लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को इसकी सुविधा नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वरिष्ठ नागरिकों को जो सुविधा मिलती थी ट्रेन में उसको मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र मुंबई उपनगर, यहाँ आने वाले बोरीवली के मागाटना बस डिपो से लेके जोगेश्वरी विक्रोड़ी लिंक रोड को जोड़ने वाला रास्ता करीब करीब पूरा हुआ है। इस रास्ते में केवल 38 मीटर का छोटा सा भाग संजय गांधी नेशनल पार्क में गुजरने के कारण और इसे बनाने के लिए भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति न मिलने के कारण यह 38 मीटर रोड का काम पिछले 8 वर्षों से अधूरा हुआ है। ये मुंबई में ट्रैफिक जाम की इतनी तकलीफ रहती है, उसको ये पैरेलल रोड बनाया गया। तो ये रोड पैरेलल जब होगा तो ट्रैफिक जाम
25% कम हो जाएगा, इतना ये रोड का महत्व है। महोदय, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री महोदय से विनती करता हूं कि इस महत्वपूर्ण रोड के काम के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुरंत जारी किया जाए, जिसके यह रोड का काम पूरा हो सके और मुंबई को ट्रैफिक को छुटकारा मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। रवनीत सिंह जी। थैंक यू चेयरमैन साहब। सर मैं आज खास तौर पे मैं आप तो बोल ही रहा पर मेरे नाल सारे किसान यूनियन ने साडे ਜਾਂ किसान ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆ 1 ਸਾਲ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ C2 + 50% ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਸਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਰੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 11-12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ SKM ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਖੇਤੀ ਸਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇਸ 80% ਸਰ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਛੋਟੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਬਾਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? 10,000 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ FIR ਦਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ बड़ी जल्दी प्रोग्राम बना रहे हैं, फिर आप कहेंगे भी दिल्ली। सर सुनो इतनी बड़ी गल सर बात ही कोई नहीं इससे बड़ी। और सर किसान दोबारा यहाँ आ जाएंगे, फिर आप कहोगे भी यहाँ दिल्ली बंद हो गया। और सर उनके लिए जो BKU लखोवाल है, BKU डकौंदा है, सबसे बड़ा हमारा BKU सिद्धूपुर है सर, ऐसे ही हमारा कृषि यूनियन है सारे सर 2013 में यही लैंड एक्विजिशन बिल पास किया था, उसे बदल दिया गया और स्टेटों में उसे लागू करने के लिए बोला गया। 2013 वाला एक्विजिशन बिल दोबारा लिया जावे। 700 लोग सर मरे उस टाइम, 700 लोग शहीद हुए सर। उन्होंने परिवारों लिए 10 लाख रुपया ते उन्होंने नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट देवे सर। उन्होंने दूजी गल सर खेती का काम पोल्यूशन में कैसे आ जाएगा सर? इंडस्ट्री तो हो पोल्यूशन में, जितनी खेती के धंधे हैं, जितने खेती उसे पोल्यूशन से बाहर निकालने चाहिए। और सर दिल्ली में उन किसानों का बड़ा मेमोरियल उनका यहाँ बनना चाहिए जो किसान यहाँ पे शहीद हुए हैं सर। नहीं दोबारा वो सड़कों पे आएंगे और सरकार के लिए मुश्किल होगी। थैंक यू सर। और थैंक यू। रिलीफ टू फार्मर्स था आपका 0 आवर, आपने एजिटेशन तक पहुंच गए। रिलीफ टू फार्मर्स was supposed to be the demand. मैं निवेदन करूंगा मनीष तिवारी जी। मानयोग प्रधान जी, हिंदुस्तान दे संविधान दी कंकरेंट लिस्ट दे विच धारा 25
एजुकेशन ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ 1158 ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੀ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮਨਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 21 2023 ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕੈਡਮਿਕ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਫੀਸ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ जल्द तो जल्द सहूलत दी जाए। थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीष जी। श्रीमती रमा देवी जी। सभापति महोदय, आज बहुत ही आवश्यक हमारा विषय है, उस पर बोलने जा रही हूँ। मैं सदन का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरने वाले उत्तर बिहार के मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर पथ की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में देश के सुदूर क्षेत्र तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से देश में अभूतपूर्व गति से राजमार्गों का विकास एवं निर्माण हो रहा है। ज्ञात हो कि मेरा शिवहर संसदीय क्षेत्र भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित है। एक पिछड़ा हुआ इलाका है जहां सड़क एवं परिवहन का अभाव है। मेरे क्षेत्र में गुजरने वाली मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर पथ का अधिकांश भाग स्टेट हाईवे में आता है तथा इसकी कुल लंबाई लगभग 110 किलोमीटर है। यदि इसको एनएच की श्रेणी में शामिल करते हुए इसका रूट मोतिहारी, ढाका, बेलवा, शिवहर, मीनापुर, झपाहा किया जाता है तो इससे पूर्वी चंपारण, शिवहर एवं मुजफ्फरपुर जिला परस्पर एक ही रूट में जुड़ जाएंगे तथा इनसे जुड़े पिछड़े इलाकों का विकास संभव हो सकेगा। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध होगा कि जनता के व्यापक हित में बिहार के मोतिहारी, ढाका, बेलवा, शिवहर, मीनापुर, झपाहा पथ को नए एनएच के रूप में शामिल करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र बहरिया जी। सुभाष चंद्र बहरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र भीलवाड़ा के एक बहुत बड़ी समस्या के बारे में आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ। मान्यवर, मेरे भीलवाड़ा में काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और वहाँ पे ईएसआईसी जो है लागू है और लगभग 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी वहाँ मासिक अंशदान करते हैं और उनके परिवार के सभी सदस्य मिलाकर करीबन 5 लाख लाभार्थी जो ईएसआईसी से हैं स्वास्थ्य के लिए, वो जरूरत रहती है उनको। परंतु सबसे बड़ा दुख है कि वहाँ जो ईएसआईसी का वो राज्य सरकार द्वारा चालू है और राज्य सरकार द्वारा ही चलाया जाता है और उसमें काफी रिक्त है पद, डॉक्टरों के, स्पेशलिस्टों के। बहुत बड़ा भवन है हॉस्पिटल का, बहुत बेड है, लेकिन बराबर नहीं चल रहा है।
मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि इसको आदर्श हॉस्पिटल घोषित करके ईएसआईसी खुद के अंडर में लेवे और खुद संचालित करे। यह बहुत आवश्यक है ताकि वहाँ पे जो काम करने वाले श्रमिक है उनको और उनके परिवार को पूरा लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वीके श्रीकंदन जी। Hello, respected sir. The farmers, especially from the district of Palakkad, which is the rice bowl of Kerala, are facing immense difficulties on account of less return for their produce as well as the backlog of amount for the paddy they given to government. The government of Kerala has failed to disburse paddy procurement price to many thousands of farmers, citing that the general share of procurement price has not yet been released to the state government. The farmers were not able to sow for the second season, and many of them at the verge of committing suicide, as the farmers were not able to repay the bank loans, and other debits due to non-disbursement of money by the government. Therefore, I urge upon the government to look into it and address this issue very seriously. Thank you, sir. Thank you. विनायक राव जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं शून्यकाल में देश में बढ़ती हुई जो गुनहगारी है और जिसका रिपोर्ट एनसीआरबी के माध्यम से सामने आया है उसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विनायक जी, आपका जो सब्जेक्ट है इंस्टॉलेशन ऑफ ए स्टैच्यू ऑफ छत्रपति, मैंने उसके बाद विषय बदलने के लिए विनंती की है और मैं सामने जो हाँ मैं दिया है, ये देखिए सर। अच्छा देखिए, यहाँ से दिखाई नहीं देता बस नहीं दिया मैंने 11 बजे दिया है सर। धन्यवाद सभापति महोदय। इस अवसर पर मैं देश में बढ़ती हुई जो गुनहगारी है इस महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती दर को इस सदन के ध्यान में मैं लाना चाहता हूं और जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की नवीनतम भारत में अपराध रिपोर्ट 2022 जो पेश हुआ है उसके माध्यम से जिस तरह से अपराधों में बढ़ हुई है उसमें सद्भाग्य से पिछले वर्ष से इस वर्ष में ओवरऑल गुनहगारी में कमी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से महिला और बच्चों में जो जिस तरह से गुनहगारी बढ़ गई है वो भारी चिंता की बात हो चुकी है। सभापति महोदय, रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 4,28,278 मामले सामने आए, क्योंकि पिछले वर्ष में उससे बहुत कम थे और इसमें 4% बढ़ोतरी हो चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ऐसी है, महिलाओं का अपहरण, शील भंग करने के इरादे में हमला और बलात्कार इस घटना ज्यादा तौर पे हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा स्टेट जो आगे है उस स्टेट का नाम है, अधिकतर बलात्कार के मामले में दर्ज करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा, ये 5 राज्यों में महिला और बालिकाओं के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो चुके। सभापति महोदय, 2021 की तुलना में 2022 में करीबन 9% अत्याचारों में वृद्धि हो चुकी है और इनमें अधिकांश मामले अपहरण 45% से संबंधित ज्यादा है। यौन कम से कम 39% हो चुके हैं और इसी तरह से अगर देखें तो पूरे देश में महिला और यौन का यानी पीड़ित बच्चे लोग, बच्ची हो, इनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बलात्कार करने की घटना भारी संख्या से हो रही है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी के विनती करना चाह रहा हूँ कि महिला और के खिलाफ अपराधों की यह बढ़ती दर न केवल हमारी आबादी के बड़े हिस्से की आकांक्षाओं
और कल्याण की संभावना को सीमित करती है। इसीलिए मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स का निर्माण करें और संबंधित जो पुलिस यंत्रणा से ज्यादा अलर्ट करे, ऐसी मांग करता हूं। धन्यवाद सभापति। धन्यवाद। धन्यवाद। संतोष कुमार। आपने काल में पूर्णिया जिला जो भारत के प्राचीनतम जिले में शामिल है, लेकिन ये साथ ही उत्तर बिहार जो व्यापारिक मंडी है, व्यापारिक केंद्र है, लेकिन रेल कनेक्टिविटी के मामले में काफी पीछे है और लगातार इस इलाके की उपेक्षा हो रही है। मैं पूर्णिया के रेल यात्रियों के आवागमन हेतु सरकार से मांग करता हूं कि 13,205 और 6 जनहित एक्सप्रेस और 14,617 और 18 जनसेवा एक्सप्रेस तो पूर्णिया कोट तक विस्तारित करने का प्रपोजल रेलवे बोर्ड में लंबित है। मैं आपके माध्यम सरकार से मांग कर रहा हूं कि इस स्वीकृति दे और रेल हालत यहाँ तक जो दोनों गाड़ियां हैं वो पूर्णिया कोट तक इसका परिचालन हो सके। साथ ही मैं पूर्णिया कोट और जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस और हाटे बाजारे ठहराव की मांग कर, इसको लेकर कई बार जन आंदोलन उस इलाके में हो चुका है। इसलिए रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि ये ट्रेनों का ठहराव हो, साथ ही जो पूर्णिया कोट हमारा रेलवे स्टेशन है, पूर्णिया कोट जंक्शन वॉशिंग पिट का निर्माण हो। यह प्रपोजल काफी समय से पड़ा हुआ है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो पिछड़ा इलाका है, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसको आगे लाना है, लेकिन रेल के क्षेत्र में हम लोग दर्जनों बार लिखित रूप से और मौखिक रूप से रेल मंत्री जी से भी आग्रह किए हैं, सदन के में आग्रह किए हैं, लेकिन जो एक्सप्रेस इलाका है उस पर रेल के क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं है। खास करके जो उत्तर बिहार का इलाका है, पूर्णिया का इलाका है, अररिया का इलाका है, किशनगंज का इलाका है, रेल के मामले में महरूम है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से इसको आगे लाया जाए, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी। Thank you, sir. Sir, Odisha farmers have been hit by non-payment of their claims under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Even after several pleas from them, the insurance companies are yet to settle dues of the farmers, which is more than 600 crore. The objections raised by the insurance companies have been duly applied, yet the claims have not been settled, which has led to farmers in many places and likely to affect the enrollment process for next season. Odisha government was one of the first states to implement the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and has been continuing with the program Kharif 2016. The insurance companies have made a hefty profit of more than 40,000 crore in the country since the implementation of the same scheme in 2015 and 16. But they are not settling the dues of the farmers. Through you, sir, I would request the government to look into the matter and issue the suitable directive by the Department of Agriculture and Farmer Welfare, the Government of India, to the insurance companies for settlement of the claims at the earliest for safeguarding the interest of the farmers. Thank you, sir. धन्यवाद। श्री सुरेश। श्री सुरेश। Thank you, Chairman, sir. Sir, in Kerala, the regular train service, Malabar Express, Shabri Express, are running packed to the fullest, and the railway authorities are denying giving the state extra train service, extension of trains, extra bogies, and new bogies, and more stoppages, various trains, and the worst part is that trains that were cancelled due to the lockdown are yet to be restored, even after years past the pandemic. Sir, I would request more coaches
provided in passenger and memo and express trains in Kerala. Further, the Nilambur-Kottayam express train to be extended to Kollam and Punalur, so that passengers who are unable to avail any train after Venad and Palarvi Express departs to be able to avail train service and the train running Kollam-Shengotai section. Sir, the Kollam-Shengotai section running trains are having only 14 bogies. That is, the rush of the train, these 14 bogies is not sufficient. Therefore, I demand before the railways, sir, instead of 14, 20 bogies should be provided Kollam-Shengotai line, sir. Sir, I would like to point out the Vande Bharat trains have begun. Almost all other trains are being held at stops for giving to way to the express train to pass on priority. This situation is causing daily passengers who are mostly employees and traders, students, lose precious time, and the railway must find a way to address this issue at the earliest. I would like to ask state government, state that the passengers trains that are lifeline or regular commuting are converted into express trains, and this scenario has also impacted the regular commuters. I request that more passengers train to be provided Kerala state and more coaches in current passengers trains to be allotted as well. The festive season and also vacation season as well the day, but the sufficient train service not available in Kerala. That's why I would like to request through you, sir, government to address this important issue immediately. Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, the widening project of National Highway 66 Kerala is progressing. It is one of the largest national highway projects in Kerala state. But the people living in both sides of National Highway have many concerns as they feel divided and separated in their villages and towns by this NH66. People have been requesting for the construction of small vehicle underpass in various places to ensure connectivity and access between two sides. In my constituency, Trichur, small vehicle underpass should be constructed in Mamnalangundu Junction, in Punnayur and Punnayur-Kolam Panchayats, in Chetuva of Angandur Panchayats, in Ulambura and Puliyamduruth of Talikolam Panchayats, in Natiga Center of Natiga Panchayat, and in Edamuttam Center of Valapad Panchayat. I had conveyed these demands of people of the Minister of Road and National Highways, Sri Nitin Gadkari and the NHAI officials. But there is no proper step taken by the Ministry of solve the issue and the concerns of people. So they are agitating. I once again request to the Honorable Minister of Road, Transport and National Highways to consider this and approve this demand of people. This is an important and serious issue in my constituency, Trichur, Kerala. Thank you, sir. श्री दिलेश्वर कामत। धन्यवाद सर, आपने शून्यकाल के अवसर पर महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का आदेश दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, सुपौल संसदीय क्षेत्र के पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत प्रतापगंज से भीमनगर नई रेल लाइन के लिए प्रो इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण RET सर्वे के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिली थी और कार्य प्रगति पर था। सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। महोदय, 1934 के भूकंप में उक्त खंड पर रेल लाइन ध्वस्त हो गया था, किंतु अभी तक रेस्टोरेशन नहीं हुआ है तथा रेल का परिचालन प्रारंभ नहीं हुआ है। मैं बराबर यह मांग सरकार से करते आ रहा हूं। मैं सदन मादे रेल मंत्रालय से आग्रह है
कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उक्त रेल खंड को पुनः चालू कर रेल यातायात का परिचालन शीघ्र किया जाए, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के जनता को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद। रमेश बिदुरी जी। धन्यवाद सभापति जी। आपने मुझे एक बहुत ही सामाजिक व्यवस्था के मामले को लेकर एक विषय पर बोलने का मौका दिया। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उनकी दूरदृष्टि से समाज के सभी जातियों के वर्गों के, चाहे वो महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा हो, सभी जातियों की तरफ उनके उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन रेलवे के अंदर एक जो वरिष्ठ नागरिक की सीट्स होती है, उनके आवागमन के लिए वो आरक्षित हैं, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड हैं। आज के इस भागदौड़ में परिवार छोटे हैं और वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन रेलवे में सफर करते हैं, तो कुछ लोगों को उस आरक्षित सीटें होने के कारण लिमिटेड हैं। ज्यादा लोग जाना चाहते हैं, जब जाते हैं तो उनको ऊपर नीचे की बर्थ में उनकी सीट मिलती है, जिससे उनको बड़ी गंभीर समस्या को फेस करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा है कि परिवार भी छोटे हो गए हैं, लोग भागदौड़ की जीवन में समय भी नहीं दे पाते हैं कि अपने पेरेंट्स को, बुजुर्ग को ट्रेन में छोड़ के चले गए और उस अगले स्टेशन पे लेने आ जाएगा, तो रास्ते में ट्रेन के लिए मेरा माननीय मंत्री जी रेल मंत्रालय से आपके माध्यम से निवेदन है कि सीनियर सिटीजन की जो बर्थ है उसको कंपलसरी ग्राउंड लेवल पर, निजी लेवल पर करने का माननीय मंत्री जी व्यवस्था करें, जिससे ऐसे सीनियर सिटीजन को आने वाले समय में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोअर बर्थ, नीचे नहीं, लोअर बर्थ। शिरोमणि राम। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री जी, राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान हमारे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के जनपद बलरामपुर की तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह जनपद बलरामपुर अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जो कि चंदनपुर, पचकड़वा, भारत नेपाल सीमा से पचकड़वा, गणेशपुर, जैतापुर, उतरौला, मनकापुर, नवाबगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ व संगम नगरी प्रयागराज तक मार्ग को राष्ट्रीय राज्य मार्ग NH में सम्मिलित स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य कराया जाए, जिससे आज़ादी के 75 वर्षों के बाद अनुसूचित जनजाति के लिए एवं देश की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल जो चंदनपुर भारत नेपाल सीमा पर आने जाने के लिए एवं धर्मनगरी, रामनगरी, अयोध्या एवं संगम नगरी प्रयागराज को जाने के लिए यह एकमात्र सड़क है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष मांग करता हूं, इस मार्ग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH के अंतर्गत निर्माण कार्य कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राघवन जी। Chairman, sir, I would like to rise before you to bring about some burning issues being faced by railways in north part of Kerala. Sir, Shornur-Mangalore segment of Palakkad division of Southern Railways faces brutal disparity in comparison with the rest of the division of Southern Railways. Sir, Bangalore is the nearest metropolitan city to North Kerala, nearer than that of its own state capital, Trivandrum. Sir, however, when South Kerala under Trivandrum division has 11 trains to Bangalore, North Kerala under Palakkad division has just 2 trains to Bangalore. Sir, train number 16511 and 16512, which commutes between Bangalore and Kannur via Mangalore, is kept idle at Kannur for 6 hours, sir. If it is extended to Kozhikode as demanded many times by utilizing the idle time, so we will get 1 train to Bangalore with elevation of rush in evening trains to the north. Sir, besides introduction of a new train, Vande Bharat, in between Bangalore and Calicut via Palakkad is a must for this part of the country, as waiting list in all classes goes for weeks. So secondly, urgent measures be taken, introduce more memos to North Kerala to reduce brutal rush in office school going hours.
Sir, here also, South Kerala has 13 memos, sir, while North Kerala has just one. So I would like to request Honorable Minister, please consider these suggestions and sort out these issues. Thank you, sir. Thank you. Shri Pradyut Bardoloi. Well, sir, I would like to draw the attention of the Government of India of the alarming rise of the cancer patients in our country. Sir, as per the figure of National Cancer Registry Program, in 2018, the figure was 13,25,232. The figure has risen in 2022 to 14,61,427. So, but this figure is not exhaustive. And we also know the incidence of cancer is not uniform in all over the country. In certain parts of the country, the incidence of cancer is more than other parts of the country. So, unfortunately, the northeastern region has become the cancer capital of India. So, you'd be surprised to know that in 2018, the Cancer Registry of India warned of the Northeast becoming India's cancer capital of India. By 2023, the situation worsened, with Manipur experiencing a 6.48% cancer diagnosis, far above national average of 2.45%. According to the National Cancer Registry Program, through the varying degrees of escalation, the incidence of cancer is prevalent all over the Northeast. And not only the cancer patients, so the sufferings of the common people as we have it. So I would like to draw your attention and would also like to request the Government of India to take up very specific programs. It is high time for the central government to acknowledge the gravity of the situation and take concrete steps to address this emerging crisis. Suggestions to the government are given, including the Cancer Society of India. These suggestions should be very, very sincerely implemented, sir. Number one, HPV vaccination to be included in the national immunization program for both boys and girls in the age group of 9 to 14 and should be given at free of cost. Number two, cancer to be made notifiable disease so that we have more accurate data for research and policy making, etc. Number three, sir, the central government should also support the education and placement of more medical specialists in the northeastern states with an emphasis on early cancer identification and basic care. Number, sir, make policy for tobacco-free India by 2033, more strict rules for banning tobacco products near schools inaccessible to school children. Dedicated 24/7 national helpline for all cancer-related queries. Research for the Indian ethnicity to provide affordable care. Control of phenomenal prices of cancer drugs. And sir, as Northeast is becoming the cancer capital of India, the Government of India, the Health Ministry should pay special emphasis to bring up the cancer treatment to the affordable level to all over the northeastern states. Thank you, sir. धन्यवाद. राजन विचारे. अध्यक्ष महोदय धन्यवाद. अध्यक्ष महोदय, भारत में 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर से थाने तक पहली ट्रेन चलाई गई थी. ठाणे रेलवे स्टेशन एक ऐसा ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के रूप में माना जाता है. इस स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने के लिए 2014 से जनता के प्रतिनिधि के तौर पर कई बार संसद में आवाज उठाते आ रहा हूँ, जिसके बाद इस योजना में अड़चन लाने वाले जर्जर इमारत को रेलवे प्रशासन ने तोड़ दिया. यहाँ स्थित स्टेशन मास्टर के कार्यालय अन्य कार्यालय स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन ठाणे स्टेशन पर यात्रियों का पर्याप्त प्लेटफॉर्म और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है. इस संज्ञान में
लेते हुए रेलवे ने लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के साथ दादर, ठाणे, कल्याण और ठाकुरली इन 5 स्टेशनों के विकास के लिए कुल 3,600 करोड़ रुपए की राशि आवंटित किया गया है, जिसमें श्री छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के लिए 2,500 करोड़ और थाने रेलवे स्टेशन के लिए 983 करोड़ रुपए की स्वीकृत का समावेश है। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक ऐसा ये ठाणे रेलवे स्टेशन की पहल के लिए मैं केंद्र सरकार का आभारी हूँ, लेकिन मेरे साथ रेलवे अधिकारियों के बैठक में रेल अधिकारियों ने कहा था कि ठाणे रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट के तर्ज पर मल्टी मॉडल हब के रूप में विकसित करने जनवरी 2024 में प्रत्यक्ष रूप से कामों की शुरुआत की जाएगी, लेकिन अब तक इस संबंध में गति मिलना नजर नहीं आ रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से रेलवे मंत्री को से अनुरोध करता हूं कि इस ठाणे रेलवे स्टेशन में हर दिन 7.5 से 8 लाख यात्रियों की भीड़ रहती है और इस यात्रियों के बढ़ते भार के कारण अपर्याप्त पैदल यात्री पुल और प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई अन्य सुविधा उपलब्ध करने के लिए जल्द से जल्द ठाणे रेलवे स्टेशन की भूमि पर एक मल्टी मॉडल हब स्टेशन परिवर्तित करके रेलवे की जगह पर पीपीपी पद्धति द्वारा बनाने वाले 3 कमर्शियल टावरों में कॉलोनी मकान और मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। राजीव रंजन सिंह। अल्कोहल महोदय, कोरोना काल के दौरान पूरे देश में रेल सेवा बंद कर दी गई, लेकिन कोरोना काल के बाद जब रेल सेवा बहाल हुई तो रेल सेवा बहाल होने के बाद कोरोना काल के पहले जितने ठहराव महत्वपूर्ण स्टेशनों पर महत्वपूर्ण ट्रेनों का था उन सभी को समाप्त कर दिया गया। कई छोटे स्टेशन हॉल्ट जहां पैसेंजर गाड़ी रुकती थी, ईएमयू ट्रेन रुकती थी, उन सब को भी बंद कर दिया गया और जो मेरी जानकारी है लगभग 10,000 ठहराव ट्रेनों का एक आदेश से रद्द कर दिया गया, जो उचित नहीं था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महोदय मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई महत्वपूर्ण स्टेशन हैं, बड़हिया, बाढ़, अथमल गोला, इन सारे महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जो महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव थे उसको बंद कर दिया गया। कई छोटे स्टेशन बंसीपुर, कुंदर हॉल्ट, इसमें ईएमयू ट्रेन पैसेंजर ट्रेनें रुकती थी, उसको भी बंद कर दिया गया। इसके विरोध में वहां स्थानीय स्तर पर जन आंदोलन हो रहा है, लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे लाइन पर धरना दे रहे हैं। 3-3 दिन तक मेन लाइन की पूरी रेल सेवा ठप रही, उसका रूट डाइवर्ट करना पड़ा। ये सारी परिस्थिति जो है आम लोगों को परेशानी का कारण बन रहा है। जो सुदूर हॉल्ट में या पैसेंजर ट्रेनों से आते हैं वो गरीब लोग होते हैं, ग्रामीण लोग होते हैं, जिनके आवागमन का कोई और दूसरा साधन नहीं है। तो इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि बड़हिया में, बाढ़ में, अथमल गोला में जो महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव कोरोना काल के पहले था, या जो छोटे स्टेशन बंसीपुर, कुंदर हॉल्ट में जो ईएमयू और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव था, उसको पुनः बहाल किया जाए ताकि वहां के लोगों को लाभ मिल सके। 1 दर्जन से ज्यादा पत्र मैंने रेल मंत्रालय को और रेल मंत्री जी को लिखा है, आज तक एक भी पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए महोदय हम आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से आग्रह करते हैं कि बड़हिया, बाढ़ और अथमल गोला के सभी ट्रेनों का और जो छोटे हॉल्ट और पैसेंजर ट्रेनों के ठहराव को पुनः बहाल किया जाए, यह मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी। Sir, I would like to flag the attention of the House that we all have witnessed with bated breath the rescue operation on NH 134 and the Silkiara Bend Barket Tunnel. Sir, 41 workers were trapped
for 17 days in the tunnel. So the horrible episode still has been haunting us. But sir, what I would like to highlight before you, that it is not an isolated incident. I would like to refer that recent incidents of collapse in Himalayas also taken place. Number one, Subansiri Lower Hydroelectric Power Project. 2, Tista River flash flood. 3, Kiratpur Nedchok Tunnel collapse in Himachal Pradesh 2015. 4, Tehri Hydro Project Tunnel collapse 2004. Sir, the reasons that have been cited by the experts are also, I feel, to be included over here. First, fractured or fragile rock. 2, water seepage. 3, landslide-prone Himalayan rock system. 4, lack of geological and geotechnical studies. 5, improper study of CR zone. 6, failure to design on escape tunnel. Sir, in the last moment, sir, rat hole miners, they have been engaged to rescue those ill-fated laborers who were trapped. Sir, what I feel that this kind of situation which took place in the Uttarkasi could have been averted, provided the government took a little patience to those geologists who have earlier red flagged that this kind of tunnel could be disastrous. But sir, also the government still not responding to such incident. Even there is an ambiguity, there is a contradiction between the statement of the media and the statement made by concerned minister. There was the escape route, it was stated by the expert, but minister stating that yes, there was an escape route. I want to clarify the issue from the government side. Thank you. Sumalata Ambarish ji, 1 minute. Thank you, sir. Sir, according to the Global Climate Report published by the UN leader also. this year, 2023 has been the hottest ever year on record. And the impact of this has been felt in all corners of the world. Sir, my state of Karnataka has received a very weak monsoon, and 223 out of 236 taluks have been affected by the drought, resulting in an estimated loss of about 30,000 crores. Sir, my constituency of Mandya is amongst the worst affected, where all the taluks have been declared drought hit and farmers are in extreme distress. Sir, about 50 to 75% of the standing crop has been lost. My farmers are primarily sugarcane growers and hence do not receive the insurance benefits available under the PM Fasal Bima Yojana also. And furthermore, we are facing crisis in several areas without water to drink, wash or cook. Sir, at this critical juncture, we look to the government of India, and my heartfelt appeal to the Honorable Prime Minister of India to come to the aid of our farmers and provide a suitable financial package to help them out of this situation. And also, we want your concurrence for better utilization of waters from our rivers to support the basic needs of our farmers and my state. Thank you, sir. Thank you. Before I call Mr. Premchandran, I would like to make an announcement. The Bharatiya Nyaya Second Sanghita 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha Second Sanghita 2023, and Bharatiya Sakshya Bill Second 2023 these three bills have been uploaded. Now, Mr. Premchandran. Thank you very much, Mr. Chairman. Sir, I would like to draw the attention of the Union government regarding a very serious situation which is prevailing. One of the most important pilgrimage in India, that is Sabarimala in the state of Kerala. So the hardships and sufferings of the pilgrim in Sabarimala is too much because lakhs and lakhs of people are coming to Sabarimala for darshan during the Magara Vilak and Mandala Vilak season. Now this is the Mandala Vilak season, lakhs of people are there.
See, the quite unfortunate thing to be noted is that the state police as well as the Devasam authorities has not made proper arrangements and facilities for having a better darshan to Sabarimala. Because of the lack of proper facilities and arrangements, people are suffering like anything. See, these pilgrims have to stand in the queue for 18 to 20 hours. Sir, 18 to 20 hours, they have to stand in the queue and to have the darshan. And one girl pilgrim has died in the queue. That has also happened. So far, no facilities, arrangement, nothing is being done. Normal case, so many meetings by the Chief Minister will be done. But it is quite unfortunate to note that the situation is very, very serious. So what the demand, which we all MPs from Kerala, we are making a demand that what is the role of the union government? That is, chairman is asking. I know it very well. Sir, my suggestion is we are seeking the intervention of union government by giving support and aid by means of the National Disaster Management Authority has to give support and aid to the state of Kerala so as to make the situation in a good condition. Otherwise, it will be becoming a big casualty. It's a very serious issue that used to be responded by the government. Sir, we are seeking a response from the government. Well remember, I had met you at Sabarimala. Yeah. On the Makar Sankranti day some years ago. Yes. Now, Mr. Anthony. Thank you, Chairman. Are you associating with? Just 1 minute. Sabarimala is in my constituency. My constituency. I know that. Yeah. I know that. That's why I called your name. You associate yourself. All the members from Kerala. Yeah, I associate with this. Please send your slip. The serious Now, issue taken by the MC Premendran. Sir, the current situation in Sabarimala. सर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं सर कि आपने एक महत्वपूर्ण एक मिनट राम कृपाल, just one. To maintain law and order and to ensure safe passage to pilgrims, there are only 650 policemen are present for the pilgrims, whereas the Chief Minister has taken 2,500 policemen and officers for his royal chariot called Navakerala Sadas. What? ठीक है, हो गया. माननीय सभापति महोदय, राम कृपाल जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर मुझे बोलने की इजाजत दी है. मैं बहुत ही पीड़ा के साथ आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं सर. मेरे संसदीय क्षेत्र मसौढ़ी में कल सुबह 9 से 10 के बीच में एक अनामिका नाम की बेटी जो नाबालिग थी, मात्र 17 साल की थी, दलित बेटी थी, अपने घर से कोचिंग के लिए जा रही थी. थाने के ठीक सामने क्लोज रेंज से गोली से मार दिया गया. क्या कसूर था? कमलेश पासवान की बेटी नहीं, बल्कि हम सब लोगों के देश की बेटी थी जो दलित समाज से आती थी. क्या कसूर था उसका? कैसे सुरक्षित रहेगा बिहार में आम आवाम? अब से कुछ 1 महीना पहले एक दूसरी घटना की जानकारी दे रहा हूं सर. ठीक सामने, थाना के सामने, रानी तालाब विक्रम के अंतर्गत आता है सर, देवराज नाम का. सर मैं डिमांड करिए. मैं डिमांड करता हूं, देवराज यादव नाम के व्यक्ति को, जो व्यवसायी था, उसको भी गोली का शिकार होना पड़ा. बिहार में अराजकता की स्थिति है. हर दिन गोली गोली. यही नहीं, पुलिस भी असहाय हो गया है. पुलिस के सामने डकैती होता है, रोज हत्या होता है. पटना राजधानी में कोई ऐसा दिन नहीं है जब हत्या नहीं होता है. पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति है सर. कैसे सुरक्षित रहेगा? मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, दलित बेटी के साथ न्याय कीजिए, गिरफ्तार कीजिए तुरंत अपराधी को, स्पीडी ट्रायल कीजिए. हाँ, सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.
The special session of Parliament commenced with a very important message from Chairman of Rajya Sabha. Honorable members, use of wit, humor, sarcasm, and even acerbic comments inside Parliament are important, inalienable facet of a vigorous democracy. These days, we don't get to hear such light-hearted exchanges. Hopefully, we'll see the revival of wit, humor, and scholarly debates. Lighter moments were witnessed during the special session as Chairman sought to use laughter as the best medicine in the House. If you want to address the chair, you can gentlemanly rise and make your point. Not in a cozy chair like this. One second. No. Honorable, one second. Leader of the opposition. Honorable leader of the opposition. और उसके पहले मैं खड़गे जी आपसे एक बात कहूंगा कि जो मैंने विट ह्यूमर की बात की है उसमें आप पर लागू नहीं है। आपने विट भी दिखाया है, ह्यूमर भी दिखाया है, सरकाज़म भी दिखाया है। वो बात मैंने बाकियों के लिए कही थी। मैं ये सोच के आया था क्योंकि दौड़ते दौड़ते रात के 1:30 बजे यहाँ पर पहुँचा। मैं ये समझ के आया था आज का दिन बहुत अच्छा है और हमारे चेयरमैन साहब गुस्से में नहीं रहेंगे और इसको डराएंगे नहीं और बड़े प्रेम के साथ सबको लेकर चलेंगे, ये उम्मीद से मैं आया था। यहाँ आते ही एकदम आपने गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने रोना, तो ये हो रहा है। It is 261st session, special session. Then came the much-awaited historic move of shifting the entire parliamentary system from Samvidhan Sadan to the Parliament House of India. माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। Parliament House of India. This iconic building is a cradle of empowerment, igniting dreams and nurturing them into reality. The treasured and iconic legislative debates in this temple of democracy are replete with wit and humor. Humor is an enlivening force capable of transforming a tense and turbulent atmosphere into an amiable one. It brightens life and instills in it the spirit of harmony and goodwill. Humor is indispensable, intangible, and forms the very texture of our lives. Hello and welcome, viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV, Humor in the House. I have packed all the fascinating and captivating moments for you of wit and humor of Parliament House of India. So come along. I'm here.
I am always looking at you. Yes. But my difficulty is that And sir, when you look at, are looking whenever you more look at that me, I side smile at you. than me. No, whenever you look at me, I smile at you. Good. Sir, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे. Yes, thank you. Jairam, now you have made a reflection. Let him react. Yeah. And before that, Jairam was on right track. Jairam, you were on right track. But when I took the seat, you got little political. From science, you traveled to politics. Sir, I had got up in between also. Unfortunately, Jairam thought, Honorable Chairman, sir. सर हमारा पुराना रिश्ता है सर, हमारा पुराना रिश्ता और ये बड़े इन्होंने कुछ साल पहले आइंस्टाइन और न्यूटन को कंफ्यूज भी कर दिया था. पुराना उसको याद रिश्ता नहीं दिलाऊंगा पुराना रिश्ता पर आज उनसे भाषण सुनना पड़ा, प्रवचन सुनना पड़ा. पुराना कि हमारे रिश्ता स्पेस प्रोग्राम का क्या उपलब्धियां हैं. पुराना रिश्ता और पुराना घाव सोचा मीठा दर्द देता है. But at the end of the day, I'm sure my honorable colleague and friend Jairam will also appreciate that people run many races. There are marathons run, there are sprints run, there are 100 meters, 200 meters, 42 kilometers, all sorts of races. But ultimately, one must also acknowledge that it's the Your turn will grit come. and determination that makes the winner win. But on the other point where he made a personal comment on me, well, I'm sure everybody is human and everybody can make mistakes. Honorable members. I may not be as infallible as Mr. Jairam Ramesh. He's of course infallible. Please. He has never made any mistakes in life. I very openly and in public acknowledge I made a mistake at that point of time in the rush of speaking. But I have not made the kind of colossal mistakes that my friend Jairam Ramesh has done. So in the age of figures, statistics and evidence, I can't say I'm saying so, that's I'm true. Or anybody else says so. And it's also gone are the days when they would say I'm more experienced and wiser than you. Or I'm more grey haired. Today... Sir, I don't see grey hair. Sorry, sir. I see grey material, but grey hair is not visible. Sir, all kinds of colors are available in the market today. Sir, with you, person like you, inspiring chairman, I think it motivates everybody to use the kind of color he or she wants. For grey hair, you can look to Jairam Ramesh. Complete grey hair. I can share some with him, sir. Please. But he has more grey matter than me, sir. I think that is the sense of the house. No, I think there is a sense of acceptance. I'm glad. About 3 decades ago, I was in Rajya Sabha as a junior minister. A very distinguished member was making a scholarly address at Jairam here. At that point of time, there was entry of another member. It is in the context of leader of the house saying, I fully agree with him. I am on that. So when that member entered, the speaker got worried that that member will unsettle him. So immediately says, even my very good learned friend agrees with me, so that he doesn't say otherwise. And came the swift comment, fools never defeat. That was a comment. No, I said you have to understand, sir. I said it with apologetic mode. That if these two have agreed, we have to see in several perspectives. ये आखिर में बोलने के नुकसान बहुत है. बोलने को कुछ बचा ही नहीं. मैम, इतने हिस्सों में बट गया मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं. आप तो समय मत गिनवाइए, ये तो गिनवाते ही हैं. सर, I hope this is not cosmetic.
this parampara will be carried on and remain. नहीं तो आपको ये हाउस की महिला है सब प्लास्टिक सर्जन के. I know their firepower. I know your firepower. सर आपकी कुर्सी बहुत मजेदार. वहां बैठो तो वो झूले की तरह आगे पीछे होता रहता है. So now I know why you keep coming back and sitting here for so long. This is ये 7-star होटल में अगर कोई अच्छी चीज है तो ये व्हील अप चेयर जो है बहुत बढ़िया. आप मानते हैं ना सर? आप मानते हैं? मैं तो बीच में हूँ. तब तो दोनों आपको परेशान करेंगे. We saw hilarious exchanges as Parliament hailed the success of Chandrayaan-3. Professor, on a point of fact, Honorable Prime Minister is the Cabinet Minister for this department. That I know. I am his student. A student can always come across a situation. ये आपने बहुत ठीक कहा. When our first Prime Minister, a giant of a person, तब कहा गया था, nothing grows under the banyan tree. It is heartening to note कि यहाँ बनियान ट्री के नीचे आप इन लोगों से क्या कहना चाहते डॉक्टर हो? जितेंद्र भी है. Please go ahead. उसके नीचे एक भी नहीं परफेक्ट. हमारा जीरो करो टाइम ये घड़ी वाले जीरो करो तो ये मुश्किल हो जाएगा. प्रोफेसर साहब, अब आप राजनीति में जा रहे हो. अब आप हमें बीच में डिस्टर्ब मत करो. और मैं आज बोलूंगा 5-6 मिनट, बीच में घंटी मत बजाइए. ओके. तो लाठीचार्ज में मेरा पैर टूट गया. आज ये सही चल रहा है. राज्यसभा में आने के लिए कर रहा था. तो मैंने टिकट क्यों दिया आपने? टिकट क्यों दिया आपने? बोले इसकी जाति का कोई बड़ा आदमी नहीं था, देना था, मजबूरी में लाना पड़ा. मैं जानता हूँ बहुत फ्रॉड था. यहाँ तो करवा चौथ पे महिलाएं चंद्रमा को बहुत खूबसूरती का वो माना जाता था. लड़की का नाम है शशि. उसने कहा